understand what's external respiration. So in mechanism of respiration we have breathing, which had inspiration and expiration. Now the second step is external respiration. When in external respiration, this is a structure that you have to understand here. There, what is visible to you, ये जो आपको दिख रहा है, this is alveoli. So alveoli की जो wall है, this tissue, this wall, I'll just show you with another color. You can see here the tissue cells are there. These are called as squamous epithelium. So the alveolar layer is lined by squamous epithelium. और दूसरी लेयर कौन सी है जो यहाँ जा रही है, दिख रहा है यहाँ एक और लेयर जा रही है, ये हमारे कैपिलरीज का लेयर है. So what do you have here? Let's highlight it. This is inside the lungs. ये एक लेयर है made up of squamous epithelium. ये दूसरी लेयर है. This is also made up of squamous epithelium. These two layers, first number 1 and number 2. Okay, this first layer, I'm repeating again. Okay, let me change. Okay, here. Can you see this layer, this layer, this layer, this? These are the cells. ये सेल किसके हैं? हमारे एल्विलाई के सेल्स हैं. और दूसरा सेल यहाँ पे देखो, लाइनिंग, ये हमारे कैपिलरीज की है. ओके, सो दोनों बहुत पास पास हैं. सो व्हाई इज इट लाइक दैट? जो ये लेयर है और ये लेयर है, ये दोनों लेयर दे आर मेड अप ऑफ स्क्वामस epithelium, right? They are made up of squamous epithelium, and they are responsible for gas exchange. Which gas? Oxygen and carbon dioxide. तो जो दो लेयर के बारे में बात करी थी, फर्स्ट एंड द सेकेंड, ये दोनों लेयर मिलके बनाते हैं हमारा रेस्पिरेटरी membrane. Can you see here? Respiratory membrane. ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, दोनों लेयर मिलके बनाते हैं हमारी respiratory membrane. So let's see here. We are talking about external respiration, मतलब exchange of gas at alveoli. So first thing you have to mention here is alveoli कौन से सेल से बने? What layer is there on the alveoli? It is simple squamous epithelium. Then जो capillary wall है, sorry, one is squamous epithelium, simple squamous epithelium of alveolus, and another is capillary wall का, again squamous epithelium. So if I'm going to draw a structure, this is alveoli, and another lining is there. So यहाँ पे दो लेयर है, याद रखो. Okay, one is the alveoli layer and another is capillaries layer, right? So what is happening here? Diffusion is happening. Diffusion of gas will take place. Here, let's read this. Diffusion of gas will take place from higher partial pressure to lower partial pressure. और कब तक होगा diffusion? तब जब तक equilibrium नहीं पहुंच जाता. Till the time it does not reach equilibrium, right? It's a simple thing. Let's see here. You can read this part later. I'll explain you what I'm trying to explain. It's over here. We'll see this, we'll understand it. आप breathe करते हो तो आता है ऑक्सीजन inside the lungs, right? So जो ऑक्सीजन आपने लाए हो अंदर, when you're breathing in,
you have more of oxygen in it. तो obvious है partial pressure will be 104. ऑक्सीजन का partial pressure will be 104. लेकिन जो यहाँ पे ये जो कैपिलरी वॉल्स हैं, इसके अंदर जो ब्लड है जो हमारी बॉडी से सर्कुलेट होके आए हैं, इसके अंदर का जो ऑक्सीजन कंटेंट है, ओके, उसका पार्शियल प्रेशर होगा 40 mmHg, right? How much will be the partial pressure? 40 mmHg. तो what is happening here? यहाँ पे 104 है और यहाँ पे 40 है. So higher pressure, अभी हमने क्या बोला था? Diffusion happens from higher partial pressure to lower partial pressure. So 104 से 40 वाली जगह पे, मतलब inside this capillary what will come in? Oxygen. Oxygen जो lungs के अंदर उसका partial pressure कितना है? 104. लेकिन कैपिलरी के अंदर कितना है? क्योंकि ऑक्सीजन सारा यूज़ हो गया ना, हमने ऑलरेडी ग्लाइकोलिसिस किया, क्रेब्स साइकिल किया, ETC किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किया. सो वी हैव प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन इज बीन कंज्यूम्ड, so less of oxygen is there. So partial pressure inside the capillary wall is 40. So from 104 partial pressure to 40 partial pressure, oxygen will move in. यहाँ हुआ है diffusion of oxygen from higher pressure to लोअर प्रेशर. जब तक यहाँ बराबर नहीं हो जाता तब तक ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगा हमारी कैपिलरीज के अंदर और फिर ये जाएगा हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट. इट विल गो टू द हार्ट एंड इट विल बी सेंड टू द एंटायर बॉडी, राइट. नाउ एट द सेम टाइम व्हेन ऑक्सीजन इज कमिंग इन, हम लोग ब्रीद इन करते हैं और फिर ब्रीद आउट भी करते हैं ना. तो जब हम ब्रीद आउट करते हैं वी आर थ्रोइंग आउट मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर. तो उस टाइम भी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट काइंड ऑफ मूवमेंट. तो जो हमारे सेल्स से जो आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ओके, ये जो ब्लड है इस पाथवे में, दैट मीन्स इन दिस कैपिलरी जो ब्लड है, it is full of carbon dioxide. What is it full of? Carbon dioxide, right? तो जो एयर हमने अंदर लेके आए थे उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, राइट. सो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, लेट्स टेक अनदर कलर. इनसाइड द लंग विल बी 40, whereas inside the capillary it will be 45. सो हाई कहाँ पे? कैपिलरी में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है. सो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम हाई टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. 45 से 40 में मूव करेगा. 45 से 40 वाले जगह मतलब लंग्स के अंदर इट विल मूव. सो वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पार्शियल प्रेशर, ओके. हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करता है गैस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. व्हाट डू यू कॉल इट? डिफ्यूजन. सो यहाँ पे दो गैस का डिफ्यूजन हो रहा है. वन ऑक्सीजन इज कमिंग इनसाइड एंड द सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग आउट. And both is happening because of difference in partial pressure of oxygen and carbon dioxide in two separate places. Okay, so for a moment, let's listen to this video. It will be more clear. All of our cells need energy. They get it by breaking down glucose, a simple sugar we get from food. This process, called cellular respiration, uses oxygen and produces carbon dioxide as waste. The main function of the respiratory system is to provide the oxygen from out of the air and remove the carbon dioxide into the air. This takes place in the lungs, with the gases carried to and from the cells by the bloodstream. The exchange of gases between the blood and the air occurs in the alveoli, microscopic air sacs in the lungs that are surrounded by tiny blood vessels. When we inhale, all 300 million alveoli expand and fill with air.
oxygen diffuses from the alveoli into the blood, and carbon dioxide diffuses from the blood into the alveoli. Diffusion is the natural movement of gas or liquid particles from an area of higher concentration to an area of lower concentration. Think of how the smell of baking biscuits spreads out from the oven right through the house. Diffusion can even take place through a membrane if the particles are small enough to get through it. For example, a helium balloon that's been left for a couple of days gets smaller and softer because the helium has slowly diffused through the skin of the balloon into the surrounding air. The walls of the alveoli are membranes too, ones that oxygen and carbon dioxide can diffuse through. Because breathing keeps bringing fresh air into the lungs and the circulatory system keeps bringing blood that is low in oxygen and high in carbon dioxide, diffusion always acts to bring oxygen into the body and take carbon dioxide out. And this goes on day in, day out, for every minute of our lives. Surrounding air. The walls of the alveoli are. So I'm going to explain it once again. What is there in your textbook, what you have to write for exchange of gas. We are talking about the second step in respiration, that is external respiration. मतलब हमारे ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना. So we are going to understand how it happens. This is the alveoli wall, right? This is the surface, right? And you know it is made up of squamous epithelium. And this is the capillary wall. So you have both this together forming respiratory membrane. What do you call it? Respiratory membrane. You want to read about respiratory membrane? Please make sure you read from page number 157. First paragraph, last 3 lines. Together they make up the respiratory membrane. We are talking about they means we are talking about the alveolus ka layer, wall, and the layer of the capillaries. So now let's see what happens when you are breathing oxygen. The air is brought in, right? You're breathing in oxygen. You're breathing in air. तो उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, लेकिन ऑक्सीजन की क्वांटिटी विल बी मोर. सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी 104, राइट? जो यहाँ से ब्लड आ रहा है हमारी बॉडी से सर्कुलेट होके सेल में से यूज़ किया हुआ ब्लड आ रहा है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी ज़्यादा होगा, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगा. सो इट्स लाइक एट दैट टाइम द पार्शियल प्रेशर इनसाइड द ब्लड ऑफ कैपिलरी, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, हम लोग अभी सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं, इज़ 40. सो यहाँ देखो पार्शियल प्रेशर कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है. इनसाइड द लंग्स इट इज़ where is it high? Inside the lungs. Inside the lungs it is 104 and inside the capillaries it is 40. So from 104 to 40 it will move because हमने पढ़ा है diffusion में gas higher partial pressure से lower partial pressure में. So because of this property oxygen will enter into the walls of the capillary. तो जो blood यहाँ से आ रहा था, यहाँ देखो dark blood है और यहाँ देखो nice red color blood है, right? It is because of the increase in concentration. See the color difference here and see the color difference here. The color of red color has changed. Here it's more of carbon dioxide and here it's more of oxygen. So oxygen की entry क्यों हुई? क्योंकि inside the lungs it was 404 partial pressure, whereas inside the capillary it was 40. So 104 से 40 में
एंट्री करता है ऑक्सीजन, एंड तब तक जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होता, उसी वक्त सेम चीज़ें जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है. हमारे एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी था, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है, 40 इनसाइड द लंग्स. ओके, इट इज़ 40 इनसाइड द लंग्स. लेकिन हमारी जो कैपिलरीज है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर के है, राइट. सो इसका पार्शियल प्रेशर ब्लड के अंदर कितना है, 45. सो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर कैपिलरी वॉल के अंदर ज़्यादा है, इसी वजह से कैपिलरी वॉल से कार्बन डाइऑक्साइड आता है हमारे लंग्स के एल्वुलाई के अंदर. सो ऑक्सीजन विल कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर इनटू द alveoli and thrown out of the alveoli, right? So blood is coming with lot of carbon dioxide and partial pressure of carbon dioxide more inside the capillary wall. Because of the difference of carbon dioxide and oxygen partial pressure, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ऑक्सीजन कम्स इनसाइड द बॉडी, राइट.